Hello everyone, welcome to Arora's classes. And this session is about Interstate Council and its role in Indian federalism. In the last section, I have already covered general councils and Northeastern Council. In this session, I'm particularly talking about Interstate Council because it is very important constitutional mechanism which is for the coordination and cooperation between the center and the states and among states. So let us understand what is Interstate Council and its role in the Indian federalism, because previously UPSC PCS एग्जाम्स में कई बार UPSC PCS एग्जाम्स में इंटरस्टेट काउंसिल और इस तरह की जो और कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म्स हैं फॉर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और टू इंश्योर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन इंडिया. सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज इंटरस्टेट काउंसिल. Interstate Council is a constitutional mechanism. It is a constitutional mechanism. That means Interstate Council is a constitutional body, unlike general councils and northeastern states, because they are statutory bodies. For center state and interstate coordination provided under Article 263. Article 263 of the Constitution. But the point is, Article 263 does not automatically create a permanent council. It empowers the president to establish such interstate council. That means Article 263 में provision है for interstate council, but this article does not automatically create interstate council, because this article empowers president to create interstate council. The president may establish interstate council. President जो है वो establish कर सकते हैं. This is not mandatory provision of the Indian Constitution, because may means this can be done by the president if he or she wishes. The president may establish an interstate council if it appears that public interest would be served by its establishment. That means president may. That means this is not mandatory. President may establish an interstate council अगर उनको लगता है कि establish करने से interstate council को establish करने से public interest serve होगा. Now president define करेंगे by order, इसको create करते हैं, establish करते हैं और order में ही council की nature, duties और organization को भी define करते हैं. So what is the nature of interstate council? Interstate council is constitutional advisory body. That means advisory in nature, mechanism for cooperative federalism, forum for consultation and coordination, not a court for tribunal, because its recommendations, interstate council की जो recommendations होती हैं, they are advisory in nature. तो interstate council does not function, operate as a court or tribunal. Its recommendations are not legally बाइंडिंग. इंटरस्टेट जो भी रिकमेंड करेगी काउंसिल, इसकी जो रिकमेंडेशंस हैं वो लीगली बाइंडिंग नहीं होती हैं. द इंटरस्टेट काउंसिल इज एन इंपोर्टेंट इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म. इंपोर्टेंट इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है इंटरस्टेट काउंसिल. फॉर व्हाट? फॉर मेकिंग इंडियन फेडरलिज्म मोर कोऑपरेटिव, कंसल्टेटिव एंड कोऑर्डिनेटिव. इट प्रोवाइड्स अ फोरम वेयर union states can discuss matters affecting their common interest. That means interstate council ensures कि यूनियन और स्टेट यानी कि सेंटर स्टेट रिलेशंस इंडिया में कोऑर्डिनेटेड रहे और ये केंद्र और राज्य एक साथ मिलकर देश के डेवलपमेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए काम करें. तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन इजी हो, कॉन्फ्लिक्ट्स को मिनिमाइज किया जा सके. For that purpose, this interstate council may be established by the president by order under Article 263. So this is interstate council. Now, moving ahead, its functions may provide under Article 263. Functions may include inquiring into, advising upon. That means interstate council inquire करेगा, advise करेगा disputes पर that may have arisen between states, यानी कि interstate disputes पर को inquire और उसको advise करना. Investigate or discuss subjects in which some or all the states of the union, one or more states have a common interest. Third is making recommendations upon
common interest subjects, particularly recommendations for better coordination of policy and action. So these can be the functions or duties of interstate council. Inquiring to advising upon disputes that may have arisen between states, investigating, discussing subjects in which some or all of the states or the union or one or more states have a common interest, making recommendations upon such subjects, particularly recommendations for better coordination of policy and action. Establishment of present interstate council, ये कब हुआ? तो interstate council was established in 1990 by a presidential order under Article 263. Clear? This followed recommendation. So the interstate council was established in 1990 by a presidential order under Article 263 on the recommendation of the Sarkariya Commission, or Sarkariya Commission here becomes very important because this commission was set up on center state relations. ठीक है? Now सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशन थी कि एक परमानेंट इंटरस्टेट काउंसिल होना चाहिए, फोरम होना चाहिए फॉर कंसल्टेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट. तो सरकारिया कमीशन ने रिकमेंड किया था कि एक परमानेंट इंटरस्टेट काउंसिल होना चाहिए. ठीक है? और इसी सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशन पर 1990 में इंटरस्टेट काउंसिल को स्टैब्लिश किया गया था बाय प्रेसिडेंट ऑर्डर. नाउ कॉम्पोजिशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल? सो प्राइम मिनिस्टर इसको चेयर करते हैं. इंटरस्टेट काउंसिल की जब भी मीटिंग होती है तो इस मीटिंग को प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं. क्लियर? जोनल काउंसिल्स में चेयरमैन कौन है? होम मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर. माइंडेड डिफरेंस काफी है. नाउ मेंबर्स कौन कौन है? मेंबर्स में अगर आप देखेंगे, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल स्टेट्स, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबलीज लाइक दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर, एडमिनिस्ट्रेटर्स, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ अदर यूनियन टेरिटरीज यहां पर मेंबर्स हैं, गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स अंडर द प्रेसिडेंट्स रूल, 6 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द होम मिनिस्टर जिनको नॉमिनेट करेंगे प्रेसिडेंट. सो दिस इज द कॉम्पोजिशन. इंटरस्टेट काउंसिल इज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर, chief ministers of all states, chief ministers of union territories having legislative assemblies, administrator, lieutenant governors of other union territories, governors of state under the president's rule, 6 union cabinet ministers including the home minister nominated by the prime minister. The council can also have other ministers as may be required. So standing committee यहाँ पर आपको समझना है थोड़ा सा. Standing committee of the interstate council assist करती है council को in processing matters for consideration और इसको head करते हैं union home minister. That means standing committee of interstate council is chaired by or headed by union home minister. So this composition becomes very very important. Now why it is important for UPSC? Because UPSC ने previously कई बार interstate council, zonal councils और north eastern council पर क्वेश्चन पूछा है. interstate council एक important instrument है for cooperative federalism because it provides a structured forum where यूनियन और स्टेट्स आप कंसल्ट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं और कॉमन पॉलिसीज बनाते हैं. इंटरस्टेट काउंसिल हेल्प करती है एड्रेस करने में कुछ इश्यूज को, जैसे इंटरस्टेट डिस्प्यूट अगर है, सेंटर स्टेट रिलेशंस, इंटरनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सोशल प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेशन, शेपिंग ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस और इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज रिक्वायरिंग कोऑपरेशन बिटवीन डिफरेंट गवर्नमेंट्स. सो the bedrock of this interstate council is cooperative federalism. That means union states and states भी आपस में cooperate और coordinate करके ही क्या करें, इस इंडियन फेडरलिज्म को स्ट्रॉन्ग और स्टेबल बनाए रखें. तो ये cooperative federalism का एक बैकबोन यहां पर आप देख सकते हैं, interstate council. So interstate council and zonal council, this is very very important. What is the difference between interstate council and zonal councils? Here are some important differences between interstate council and zonal councils. We know कि interstate council एक constitutional body है under article 263, whereas zonal councils statutory bodies होती हैं और create की गई under the States Reorganization Act 1956. So this is a very important difference because interstate council is a constitutional body created or established by president under article 263, whereas zonal councils are statutory bodies which are created under the States Organization Act 1956. That means nature constitutional है, यहाँ पर statutory है.
इंटरस्टेट काउंसिल को चेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर, जोनल काउंसिल्स को चेयर करते हैं यूनियन होम मिनिस्टर। यहां मेन पर्पस इंटरस्टेट काउंसिल का क्या है? सेंटर स्टेट और इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन को इंप्रूव करना, बेटर करना, फॉस्टर करना, ये रीजनल कोऑपरेशन के लिए पर्टिकुलरली है। इंटरस्टेट काउंसिल एक ही है। जोनल काउंसिल्स 5+1, 5+1 आपको याद रखना है। 5 जोनल काउंसिल्स क्रिएटेड अंडर द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 and one is North Eastern Council created under the North Eastern Council Act 1971। डिस्प्यूट डिस्कशन यहां पर होता है और यहां पर जनरली क्या करते हैं हम लोग? रीजनल डिस्प्यूट्स और इश्यूज को डिस्कस और डेलिब्रेशन के थ्रू हम रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्लियर? सो दीज आर द इंपोर्टेंट काउंसिल्स, ठीक है? इंटरस्टेट काउंसिल, जोनल काउंसिल्स एंड नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल्स। दीज आर वेरी वेरी इंपोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म्स फॉर fostering cooperative federalism in India. ठीक है? So this is all about interstate council. You can watch this session again so that you can have a clear understanding about interstate council and its role in Indian federalism. So thank you so much for watching this session. This is done for this session. Thank you very much.